today we will learn a new topic that is gerund. Okay, so in this lesson, I will tell you what a gerund is, how a gerund formed. Okay, and what are its different functions in sentences. So, dear students, आज आम पढ़ा gerund जोड़ा गोटे इम्पोर्टेंट चैप्टर प्लस टू रो ग्रामर बहुत इम्पोर्टेंट एटा सो gerund अच्छी हम प्लस टू रे ओके सो आइरे मु तुमको कहबी gerund रो मीनिंग कोन gerund रो डेफिनेशन कोन यू नो gerund रो डेफिनेशन कोन gerund रो मीनिंग कोन गोटे gerund केमती तयारी करा जाय एवं gerund रो फंक्शन गुडी को कोन सेंटेंस रे सो आमे you know aku पढ़िबा पूर्वरु so I want to remind you know what we have studied in our last class so last class रे आमे कोन पढिचु से विषय रे टिके मु आलोचना करबी so last class रे आमे कोन पढितलु last class रे आमे पढितलु you know verbs को आमे विभक्त करतिलु finite verbs आउ non finite verbs आकार रे you know आमे डिवाइड करतिलु verbs को finite verbs और non finite verbs So for your better understanding, I would like to give you an example. मोडे example रो help नवा पे चाहूँची एक मोडे example देखो चेक तमानु को. So she has been, you can say she has been reading this book for 5 days. So she has been reading this book for 5 days. A sentence रे आमे गोटे गोटे को देखिबा she होची subject has been reading एगुडी को सब verbs ओके एवं has होची finite verb ना आको हम फाइनाइट वर्ब एति पय कहूछु आकु देखिले हमें टेंस जानि परछु जे एटा प्रेजेंट टेंस रे अछि बोली एवं बीन आउ रीडिंग एगुडी कहला नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स अछि तो आकु कोन कहबा आमे आजी क्लियरली पढिबा सो gerund पढिबा gerund होची गोटे नॉन फाइनाइट वर्ब पॉज द वीडियो सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर ऑफ थ्री टाइप्स तो फर्स्ट वन होची gerund सेकंड वन होची participle थर्ड वन होची infinitives तो नॉन फाइनाइट वर्ब तुमको कहूची ना फाइनाइट वर्ब कोन जो वर्ब टेंस शो करे मु आउतरे रिमाइंड करबा में चाहूची सो कोनोसी एम्ति सेंटेंस रो हमें परिकल्पना करि परिबा नहीं विदाउट ए फाइनाइट वर्ब जदी इफ देयर इज वन वर्ब इन ए सेंटेंस देन दैट इज द फाइनाइट वर्ब जदी इफ देयर इज ए वर्बल ग्रुप अर्थ जदि गोटे वर्ब रु अधिक वर्ब गोटे सेंटेंस रे अछि फर्स्ट वर्ब ता सब बेले होछि फाइनाइट वर्ब और रिमेनिंग वर्ब्स होछि नॉन फाइनाइट वर्ब सो नॉन फाइनाइट वर्ब को पुनर्बार तीन भाग रे विभक्त करा जाय अछि गोटे ला gerund आ गोटे ला participle आ गोटे ला infinitives ओके पॉज द वीडियो so what a gerund is A gerund is a noun made from a verb by adding ing to it. So तमे देखो ना मैक्सिमम पिला मानकर कंफ्यूज हुए एडा हमरो सब जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे मध्य पड़े
ओके सो मैक्सिमम पिला भूल करंती कोन एटी को आजे ना जिरोन टा कंप्लीटली एटा गोटे नाउन verb रे ing जोड़ी किना बा यू कैन से ऐड करी किना हमें नाउन तयारी करू ताकू हमें जिरोन बोली कहू सो नाउन हमें कहि परबा इट इज ए verbal noun that means it is a noun which is made from a verb by adding you can say ing to it. For example, run, running, play, playing, dance, dancing, fight, fighting, write, writing. So एगुडी को देखो एटी रनिंग कहले आमे यू नो काम को बुझो नहीं गोटे कामरो नाम को बुझौछ राइटिंग कहले गोटे काम को लेखिबा नहीं एटी लिखन को बुझाउछ क्राइम कहले कांदिबा नहीं कांदिबा को बुझो नहीं एटी क्रंदन को बुझाउछ ओके सो पॉज इट सो व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ gerunds सो हमें देखिबा एटी आई हैव रिटन 4 sentences सो चारटा एग्जांपल देछि मु फर्स्ट एग्जांपल रे रीडिंग हेल्प्स यू लर्न इंग्लिश Reading helps you learn English. एटी reading होची gerund. Hunting tigers is dangerous. एटी hunting होची तमरो गोटे gerund. Smoking causes lung cancer. एटी smoking होची gerund. And cooking is not my hobby. एटी cooking होची gerund. सो एटी सब जगह में देखो ना gerund रो पोजीशन कोन अछि ए सेंटेंस रे gerund रो फंक्शन कोन अछि फर्स्ट सेंटेंस रे रीडिंग हेल्प्स रीडिंग होची सब्जेक्ट तो हंटिंग मध्य सब्जेक्ट स्मोकिंग सब्जेक्ट कुकिंग सब्जेक्ट तो गोटे gerund को आमे गोटे सेंटेंस रो सब्जेक्ट आकार रे व्यवहार करि परिबा a gerund can be used as the you can say subject of any sentence okay pause the video so second function of gerund देखिबा में लता avoids meeting strangers Mr. Sahu loves entertaining friends. She hates going out at night. Do you enjoy swimming? So here Lata avoids meeting. So it is gerund. Mr. Sahu loves entertaining edala gerund she hates going do you enjoy swimming तो पोजीशन कोन ए सेंटेंस गुडी करे gerund रो पोजीशन कोन लता avoids what meeting so lata avoids what meeting strangers so meeting hochi lata avoids you can say her friend jodi ame likhitantu lata avoids her friend so her friend कोन हेतांता ऑब्जेक्ट हेतांता तो एटा ऑब्जेक्ट रो पोजीशन रे अछि लता avoids meeting you know so गोटे gerund कारो काम करूची ना सब्जेक्ट रे ऑब्जेक्ट रो पोजीशन बा ऑब्जेक्ट रो फंक्शन मध्य करिथाए हमें फास्ट रो पढिलु सो gerund रो फंक्शन कोन gerund कोन हेताए गोटे सेंटेंस रे सब्जेक्ट रो काम करथाए हमें बे पढुचु गोटे सेंटेंस रे एहा ऑब्जेक्ट रो काम मध्य करे सो सेम सिंधी सेकंड सेंटेंस रे मिस्टर साहू लव्स एंटरटेनिंग सो एंटरटेनिंग मध्य ऑब्जेक्ट पोजीशन रे अछि सी हेट्स
going, so going मध्य ऑब्जेक्ट पोजीशन रे अछि. Do you enjoy swimming? Swimming ता मध्य ऑब्जेक्ट पोजीशन रे अछि. तो आमे दीटा फंक्शन देखिलु. गोटे फंक्शन कोन, गोटे gerund. A gerund can be used as the subject of any sentence. Okay, आउ कोन पढुछु आमे सेकंड टा कोन पढलु. It can be used as the object of a sentence. आमे वर्तमान थर्ड फंक्शन पढिबा. So the third function of gerunds. One of my duties is attending meetings. His job is driving a bus. What I love most is exploring the city. Okay, so one of my duties is attending, you can say, meetings. Here, where is the gerund? So the gerund is, here is the gerund, attending. And his job is driving a bus, driving. And what I love most is exploring the city. Okay, so it is देखो. Now one of my duties is attending meetings. एठी gerund टा गोटे कॉम्प्लीमेंट रो रोल नेछ. एठी फंक्शन होची कोन, gerund रो फंक्शन कोन. एठी gerund को बडा यूज हेची, गोटे कॉम्प्लीमेंट बडा यूज हेची. तो कॉम्प्लीमेंट कोन, कॉम्प्लीमेंट को हाथ करबा. कॉम्प्लीमेंट होची सेंटेंस रो से पार्ट जो पार्ट बिना, यू कैन से, सेंटेंस केबेले कंप्लीट हे परिबो नाही, सेंटेंस ता इनकम्प्लीट. सो आमे ताकू जदी कहबा इंग्लिश रे जदी डिफाइन करबा, कॉम्प्लीमेंट इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विदाउट व्हिच ए सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. फॉर एग्जांपल आमे केबेले कहि परिबा नाही I am something. You have to write something. I am a student, a student ता हला कॉम्प्लीमेंट. He is, तमे कहि परिबा नाही. He is a singer होची तमरो कॉम्प्लीमेंट. ता बिना वाक्यटा असंपूर्ण. सो एटी हमें देखुछु gerund टा कोन, मु एग्जांपल देकी तुमको बुझौची. So she is, एटा गोटे वाक्य हे परिबो नाही. She is गोटे वाक्य हे परिबो नाही. You have to write something. So she is a nurse. एटा हला कॉम्प्लीमेंट. आको हमें कहूछु कॉम्प्लीमेंट. So complement होची, it is the most essential, most important part of the sentence without which a sentence is incomplete. Okay, तो एठी हमें देखुछु ना गोटे gerund टा गोटे कॉम्प्लीमेंट रो रोल मध्ये प्ले करे, बा गोटे फंक्शन होची कोन, गोटे gerund को हमें कॉम्प्लीमेंट स्थान रे मध्ये यूज करि परबा. Okay, so next function को हमें जिबा. So one more function of gerund. So thank you for choosing my lesson. She is good at painting. I am interested in improving my English. So ए सेंटेंस गुडी को देखिले आमे फास्ट रे gerund को आइडेंटिफाई करबा. Thank you for choosing my lesson. She is good at painting. I am interested in improving my English. Okay, आप पूर्वरु सब देखो. एठी अछि in, at, for. So gerunds can also be used after prepositions. Okay, so these are preposition.
Thank you for what? Thank you for what? Thank you for choosing my lesson. So you can say a gerund can be used as the object of preposition. Okay, she is good at what? Painting. Okay, so I am interested in improving my English. So you can say gerunds can also be used after preposition. So preposition ମାନଙ୍କ ପରେ ଆମେ gerund ର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ. Okay, so ଆମର last function gerunds can be used after some present verbs. Okay, so example ଏଠି ଦିଟା ଦିଆଯାଇଛି. When will you give up smoking? He ended up buying a TV. तो आमे देखुछु ना gerund रो पोजीशन एठी gerund यूज हेछि ए दीटी. So give up and end up ए दीटा होछि phrasal verb. So आमे किछि phrasal verbs मानंग परे मध्य gerund को व्यवहार करिथाउ. So एडा होछि gerunds रो किछि व्यवहार सेंटेंस रे केमती तारो यूज होची आमे नेक्स्ट क्लासेस गुडी करे जते बेले नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऊपर अधिक पढिबा सेते बेले को म तुमको आउरी बुझेबी को वर्ब गुडी को परे आमे gerund डेफिनेटली यूज करू ए सब जगह मु नेक्स्ट क्लासेस गुडी करे बतेबी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.